Okay, so let us see the next concept in electromagnetic induction. So I hope you can see the board. Okay, तो इसमें आज के लेक्चर में हमको ये देखना है कि combination of inductances when the two coils, suppose this is the first coil of some inductance and another coil of some another inductance. Suppose the first coil is of inductance L1, okay, and the second coil is of inductance L2, and these two coils are just connected in parallel like this. Then we can just say that the inductance of this combination here will actually be L1 plus L2, okay. But at the same time, if suppose these two coils are just going to be in सीरीज में अगर रहेंगे तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, ठीक है। लेकिन अगर वो दोनों कॉइल्स अगर पैरेलल में है इस तरह से, ठीक है, एंड इनके जो इंडक्टेंसेस है वो सपोज L1 और L2 है रिस्पेक्टिवली, देन वी कैन जस्ट से दैट द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ दिस two coils, parallel combination of two coils will actually be given by 1 upon LP, which is going to be equal to 1 upon L1 plus 1 upon L2, remember, okay. तो ये होता है। और म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में भी हमको कुछ बातें याद रखनी है कि सपोज दिस इज प्राइमरी कॉइल, okay, whose self inductance is going to be L1, okay, and suppose that this is another coil whose self inductance can be supposed to be L2 here, yes, and suppose that there is a perfect coupling between these two coils, then we can just say that the mutual inductance between these two coils is actually going to be root of L1 into L2. ये हमको इस तरह से याद रखना है. This is the condition for perfect coupling between the two coils. तो अगर दो coils के बीच में perfect coupling है तो उस केस में यहाँ पे जो mutual inductance है वो root of L1 L2 के बराबर आ जाएगा जरूर. चलो ठीक है. और अगर नहीं है वैसा तो उस केस में हम कहेंगे कि the perfect coupling is not there. So instead of that we can just define the coefficient of coupling in that case, which will be the ratio of mutual inductance to the root of L1 L2 in this case. तो ये जो टॉपिक है तो वो हमको आज के लेक्चर में करना था. Yes, then we can just go to the next topic in this chapter, that is about the eddy currents. Eddy currents तो it's actually just theoretical topic है. उसके ऊपर कोई questions MCQs वगैरह ऐसा कुछ पूछे जाते तो नहीं है. जस्ट थियोरेटिकल एमसीक्यूज भी पूछ सकते हैं आराम से कोई, लेकिन फॉर्मूला तो उसके बारे में है नहीं. जस्ट यू हैव टू रिमेंबर दैट दिस एडी करंट्स produced due to the circulating currents. These are the circulating currents which are produced due to the relative motion between the magnet and the metal. कोई भी मेटल जब किसी मैग्नेट के अंदर या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घुमाया जाता है तो उसकी वजह से उस मेटल के अंदर ही अंदर कुछ करंट्स पैदा होते हैं, अंदर ही अंदर इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं. दिस रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज एक्चुअली कॉल्ड एज एडी करंट्स. एंड इन दिस केस द एडी करंट्स प्रोड्यूसेस टू इफेक्ट्स. दो इफेक्ट्स उनके होते हैं. एक तो उनका जो हीट पैदा होता है उनकी वजह से, लॉट्स ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द एडी करंट्स, रिमेंबर. एंड द सेकंड इफेक्ट इज दैट दे अपोज द रिलेटिव मोशन, ओके, बिटवीन द मैग्नेट एंड द मेटल. मेटल को मूव करने के लिए वो अलाउ नहीं करते हैं, अपोज करते हैं. सो दीज आर द टू प्रॉपर्टीज ऑफ एडी करंट्स वी कैन जस्ट अंडरस्टैंड. ओके, एंड देन वी कैन जस्ट सी, यस, देयर इज अ सिंपल कंसेप्ट. इंडक्टेंस को जब हम डीसी के साथ कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है वो हमको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करना है आज के लेक्चर में. देखो ठीक से, ये जो सपोज ये डीसी सोर्स है, ओके, और उसके साथ हम एक इंडक्टेंस कनेक्ट कर देते हैं जिसका इंडक्टेंस सपोज L है, ठीक है. L इतना इंडक्टेंस है और ये E इतना EMF है जो कि कांस्टेंट है, और ये इसको हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया. सपोज अ प्योर इंडक्टेंस इज कनेक्टेड हियर अक्रॉस दिस डीसी सोर्स, ओके. तो डीसी सोर्स के साथ इंडक्टेंस कनेक्ट करने से होता क्या है, देखो, अगर सपोज ये स्विच जो है वो जब तक हम ऑफ रखते हैं, ये देख रहे हो यहाँ पे स्विच है और वो ऑफ है सपोज, ठीक है. तो जब तक ये स्विच ऑफ रहेगा तब तक
कोई करंट नहीं फ्लो होगा, बिल्कुल नो डाउट। लेकिन जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं, सपोज दिस स्विच इज मेड ऑन, लेट अस ड्रॉ दिस स्विच हियर। So suppose this is the switch. So far as the switch is off, no current will flow. But whenever the switch is made on, जैसे हम switch on करते हैं तो क्या होगा? The opposition offered by this inductor will be maximum, and due to that, what will happen is current in the initial time is going to be zero. ये already हमने पहले भी कभी तो भी देखा था, याद होगा आपको। When time t equal to zero, current is actually going to be zero in this case. Okay, at the first instant, initial instant, the time current is going to be zero in this inductor. No current flows at all through this inductor. Okay, but as the time passes, the current goes on increasing and becomes maximum and remains constant forever. Okay, so this is the behavior of a pure inductor to the DC source. So at the initial instant, the current is not going to be zero. Current is not going to be flowing, but after some time, the current just starts flowing, and this inductor has no role to play in that case. ये इंडक्टर का कोई रोल ही नहीं होता है प्ले होने के लिए, कुछ भी रोल प्ले नहीं करता है वो, और वो सिंपली जस्ट एक शॉर्ट सर्किट के जैसा ही काम करता है. So you can just say that after infinite time here, so after time t equal to infinity, the current I will actually be maximum, or we can say infinity. So just because there is no resistance here, अगर कुछ resistance है तो उस केस में हम ये बोल सकते हैं कि that at that time current will actually be equal to that EMF upon that particular resistance, whatever it may be. ठीक है, but if suppose resistance itself is zero, अगर ये denominator zero हो गया तो EMF कितना भी हो, current कितना रहने वाला है, infinity रहने वाला है. इसलिए ये हमको अच्छी तरह से याद रखना है. When time is zero, current is zero, but when time t equal to infinity, current also becomes infinity. ठीक है, theoretically, yeah. And in case of an ideal inductor, okay, ideal inductance के केस में हम ये बात कर रहे हैं, ठीक है. But ideal inductor, as we can just see that there doesn't exist an ideal inductor actually. Ideal inductor ऐसा कोई concept होता ही नहीं, exist ही नहीं करता है. तो उस केस में रियल इंडक्टर में क्या होता है कि कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता ही है, ठीक है, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है. इसलिए हम यहाँ पे अभी एक सर्किट कंसिडर करेंगे जिसके अंदर देयर विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ एन इंडक्टर एंड अ रजिस्टर. सपोज दिस इज द सर्किट in which the same EMF E is just connected to the series combination of an inductor L, and at the same time there is a resistance also which is connected in series with it in this way here. Yes. So L is the inductor and R is the resistance and E is the EMF which is constant. Okay, ये EMF जो है वो यहाँ पे constant है. We can just call it as E naught actually. Okay, E naught is going to be the constant EMF which is applied here in the whole circuit. So again the same thing we can just observe here, that when the time t equal to zero, current is hold at that instant for 1 instant. So current will also be zero, no doubt. Okay, but what happens is as the time goes on increasing, so the current also goes on increasing, but it increases at a slower rate than it is expected in this first case here. तो यहाँ पे फर्स्ट केस में क्या होता है कि ये जो रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस कुछ भी ना होने की वजह से करंट बहुत रैपिडली बढ़ता है, करंट का रेट ऑफ चेंज बहुत ज्यादा होता है. लेकिन यहाँ पे इस केस में क्या होता है कि करंट जस्ट इंक्रीजेस समवॉट slowly, and that rate actually depends on the resistance also, no doubt. But at any instant we can just see the total EMF in the circuit here, E naught, is actually going to be the sum of the potential difference across this inductor, that is EL, and the potential difference across the resistors, that is ER here. If you just see, the I is the current flowing through this circuit at any instant. हेलो, नंतर कॉल कर दो. हाँ, yes, let us see the concept here. So the EMF actually, the total EMF here will be actually the sum of the EMF across this inductor
plus the EMF across the register. Okay, तो EL E नॉट जो है वो एक्चुअली EL प्लस ER के बराबर होगा। अगर I इतना करंट एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर फ्लो हो रहा है, तो जैसा कि हम जानते हैं इंडक्टर EMF अक्रॉस द इंडक्टर और वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर विल एक्चुअली बी L इंटू di/dt। ओके, ये हमने ऑलरेडी फेराडेज लॉ से डिराइव किया हुआ था। और फिर ये जो रेजिस्टेंस के अंदर अंदर का जो EMF रहेगा, तो वो ओम्स लॉ से हमको मिल जाएगा सिंपली I इंटू R, दैट्स इट। And now we can just simplify this equation by using the rules of differential equation. इसको एक differential equation consider करके हम अभी आराम से, तो इसको अगर इस तरह से लिख देंगे di/L इंटू di/dt वाला जो टर्म है, तो वो अगर इस तरफ लेके आएंगे तो इस तरफ रहेगा E नॉट E नॉट माइनस I इंटू R, करेक्ट है, ये बनेगा। और उसके उसके बाद हम यहाँ पे इसको अगर वेरिएबल सेपरेट करने के लिए अगर ट्राई करते हैं, तो हमको ये मिल जाएगा इस तरह से di अपॉन E नॉट माइनस IR, विच विल बी इक्वल टू 1 अपॉन L इंटू dt। ओके, ये इस तरह से हमको मिलता है। ओके, इफ यू जस्ट इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स, देन वी कैन just be able to obtain this as। ओके, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, जैसा कि हम जानते हैं 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है। तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा log ऑफ E नॉट माइनस IR, which is to be divided by the coefficient of I here, which is going to be minus R actually, right? And that is equal to 1 upon L kept as it is into T, yes, which is as it is. Okay, and plus C Sir, you're mute. yes, sorry. Okay, so the constant of integration here can be found out by using the initial condition, that is when t equal to 0, I is equal to 0। तो ये कंडीशन अगर हम यूज करेंगे ना, तो हमको यहाँ पे मिल जाएगा log ऑफ E नॉट माइनस 0, which is divided by minus R, and that is going to be equal to, ये तो 0 बन जाएगा और प्लस C as it is रहेगा, जिससे हमको मिलेगा C actually is equal to log of E naught upon R, but it will be negative. So here it will be minus sign, no doubt. And if we just put this value of C in equation number 1, okay, जो कि यहाँ पे है, this is equation number 1 we can say, then we can just get this log of E naught minus IR upon minus R is equal to 1 upon L into T, and here it is C का value minus log of E naught, okay, upon R as it is. And then if we just multiply this throughout by R here, then we can just get this, or minus R से multiply कर देंगे, चलो ठीक है। So we can just get this log of E naught minus IR just kept as it is equal to, here it will be minus of R by L into T, and here it will be plus log of E naught simply, correct? So that this log of E naught can be transferred that side, so as to get this as log of E naught minus IR minus log of E naught, which is going to be equal to minus of R by L into T. So that if we just use this log of A minus log of B,
इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए अपॉन बी। तो अगर हम वो यूज करेंगे यहाँ पे तो हमको मिलेगा लॉग ऑफ ई नॉट माइनस आई आर अपॉन ई नॉट itself is actually going to be minus r by l into t, right? So that we can just get this as yes. तो अगर यहाँ पे हमने ये log को उस तरफ अगर लेके गए तो उस केस में क्या होगा, ये e raised to बन जाएगा, right? So we can just write this as e naught upon e naught minus ir upon e naught is actually going to be equal to e raised to minus of r by l into t, right? एंड वी कैन जस्ट सिंप्लीफाई दिस फर्दर। सो यहाँ पे ई नॉट को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो यहाँ पे इसको लिख सकेंगे 1 माइनस आई आर अपॉन ई नॉट, राइट, विच इज एक्चुअली गोइंग टू बी ई नॉट ई रेज टू माइनस ऑफ आर बाय एल, yes, into t, and then we can just shuffle the terms and just rearrange it as ये वाला जो टर्म है उस तरफ लेके जाएंगे और इसको इस तरफ लेके आएंगे, जो वो निगेटिव हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकेंगे नेक्स्ट स्टेप में इस तरह से, yes, it's e raised to I into r by e naught is actually going to be 1 minus e raised to minus of r by l into t, yes, and then we can just find out this I here finally, which is going to be e naught upon r into bracket 1 minus e raised to minus r by l into t here. We can just see how naturally this e naught by r appears here in this expression, which can be easily put as I here. E naught upon r को अगर हम I naught देंगे, let's put e naught upon r as the I naught, which is the current obtained after infinite time, just we have discussed here. तो यहाँ पे जब हमने देखा था स्टार्टिंग में कि ये देखो ये वाला जो पार्ट हमने डिस्कस किया था कि नहीं, यहाँ पे ये वाला पार्ट याद है, जिसमें बताया था कि टाइम t इक्वल टू 0 पे करंट होता है आई नॉट, जीरो, लेकिन टाइम t इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या होता है, इफ इट इज आइडियल इंडक्टर देन द करंट विल बी इन्फिनिटी, नो डाउट, but in case when the it is not an ideal inductor, in that case the maximum current will actually be the EMF upon resistance, which is actually here. अगर ये टोटल EMF जो है वो E नॉट है, तो इसलिए E नॉट को अगर हम R से डिवाइड कर देंगे तो उससे हमको वो इन्फिनिटी वाला करंट मिल जाएगा, जिसको हमने यहाँ पे I नॉट से डिनोट करके रखा है। तो इसको हम I नॉट करेंगे तो I नॉट will actually be E नॉट upon R, which is the current flowing इन द सर्किट एट इनफाइनाइट टाइम, ठीक है। तो इन्फिनिट टाइम के बाद जो करंट फ्लो होगा इस सर्किट में तो वो रहेगा आई नॉट, जो कि ई नॉट अपॉन आर के बराबर होगा, जिसको हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो हमको मिल जाएगा आई इज इक्वल टू आई नॉट इंटू माइनस ई रेज टू माइनस आर बाय एल इंटू टी हियर। दिस इज एक्चुअली गोइंग टू बी द formula for instantaneous value of current in such a case. What is this case? When the inductor is connected, the combination of inductor and resistor is actually connected in series and across the EMF of DC source, ठीक है। DC source वाले EMF के across अगर ये कनेक्ट करते हैं तो उस केस में जो करंट है, instantaneous current can be found out to be by using this formula, and at the same time जैसे हमको instantaneous current मिल जाता है तो उससे ही हम हर एक इंस्टेंट पे करंट निकाल सकते हैं, मतलब 1 सेकंड के बाद, 2 सेकंड के बाद, 3 सेकंड के बाद कितना करंट फ्लो होगा वो हम आराम से निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस इक्वेशन, बिकॉज इट कंटेन्स T हियर एंड I also. Similarly, we can just find out the EMF across the resistance also. So if you just want to find out the EMF across resistance, then ER by Ohm's law it happens to be I into R. So we can just simply say that this R into here I का जो वैल्यू है वो अगर एज इट इज यहाँ पे रख दे तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा R इंटू आई नॉट इंटू ब्रैकेट 1 माइनस ई रेज टू माइनस ऑफ R बाई L इंटू T, करेक्ट है। एंड वी कैन जस्ट सिंप्लीफाई दिस जस्ट बाय कीपिंग इन माइंड दैट दिस आई नॉट इज एक्चुअली ई नॉट बाई आर, राइट। तो अगर वो आई नॉट का वैल्यू ई नॉट बाई आर है, ये याद रखते हो, तो यहाँ पे फिर ये R इंटू आई नॉट क्या बन जाएगा, ई नॉट बन जाएगा, और उससे हम ये पता कर सकते हैं कि ई आर will actually be equal to E naught
itself into 1 minus e raised to minus r by l into t. Okay, and even we can just try to find out the induced EMF or EMF across the inductor also. So EMF across inductor EL will actually be the, no doubt, we can find it out in two ways. One is the thing that L into di by dt करके भी निकाल सकते हैं उसको. Yes, L into di by dt. Or otherwise, the second method is EL is actually equal to E naught minus ER, where ER is already found out here. तो ये ER हमको ऑलरेडी मिल गया है, तो उसको अगर E naught से माइनस कर देंगे तो बचा हुआ जो है वो इंडक्टर के अंदर ही ड्रॉप होने वाला है. तो इसलिए दोनों मेथड से हमको सेम ही आंसर मिलेगा. देखो चेक करके, अगर हम यहाँ पे ये मेथड यूज करते हैं डेरिवेटिव वाला, तो ये L into d by dt मतलब डेरिवेटिव ऑफ दिस I, where I is actually going to be I naught into 1 minus e raised to r by l into t. करेक्ट है. तो ये इस तरह से हमको मिलता है. इसका डेरिवेटिव अगर हम निकाल के लेंगे तो हमको ये मिलेगा EL which is going to be equal to L into, here I naught is going to be a constant, can be taken out, and then what is the e raised to something? We know that the derivative of e raised to something is the e raised to same thing, but we have to multiply the derivative of that something which is there in the power. तो इसलिए यहाँ पे minus e raised to r by l t का डेरिवेटिव आएगा minus of e raised to r by l into t itself, same as it is, but it should be multiplied by the derivative of this r by l into t, which is simply r by l, because we are differentiating with respect to t. Okay, so here you can just see that this l just gets cancelled, and if we just take this r and multiply it with this I naught here, then we can just be able to get this EL to be simply equal to I naught into r into bracket में yeah, e raised to r by l, or we can just say rt by l here. Okay, but as actually we know that this I naught into r is once again E naught, so therefore we can just say that this EL here is going to be E naught into e raised to minus RT by L. Just don't get confused between this E and this E here. Okay, ये E मतलब EMF है, L मतलब और E naught मतलब EMF है, लेकिन ये जो E है यहाँ पे, ये E कोई EMF नहीं है. It is the E जो 2.1712 उसका वैल्यू होता है, वो वाला E है वो, जो कि मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन या डेरिवेटिव करने के टाइम मिलता है. चलो ठीक है, अभी यहाँ पे ये हम देखते हैं कि EL इस मेथड से भी हम निकाल सकते हैं आराम से. देखो कैसे, EL will actually be equal to E naught minus ER there in this formula here. So if you just put it here, then we can just get this E naught into bracket 1 minus e raised to minus of r by l into t. Okay, so this is the value of, yes, EL here, and then we can just simplify this further. So EL will actually be equal to, E naught can be taken common, or we can just distribute this E naught inside. So E naught तो वैसे ही रहेगा minus ये E naught, यहाँ पे E naught into 1 becomes E naught only, and minus of minus plus, and here it becomes E naught into e raised to minus r by l into t here, right? So that we can just get this as E naught minus E naught cancel हो गया, बाकी बचा EL जो कि E naught into e raised to minus of r by l into t here. This is actually the expression for instantaneous value of EMF across inductor. Okay, and this is the value of instantaneous value of EMF across the resistor, and this is the instantaneous value of current flowing in the whole circuit actually. Okay, so here one thing is also to be noted that if we just see the R upon L, this factor is very important here, and the dimensions of this R upon L is actually going to be T inverse. Okay, they are opposite to the time, because this whole factor in the power has to be dimensionless. तो वो dimensionless होने के लिए इसके dimensions T inverse के बराबर होने जरूरी है, और यहाँ से ही एक RL टाइम कांस्टेंट का कंसेप्ट आ जाता है. ठीक है, what is RL time constant? We can just understand this in the next lecture. Okay, but
अभी आज का लेक्चर यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। इसके आगे का जो टॉपिक है वो हम कल नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, यस।